Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine, right? Okay, so today we're gonna start with our chapter 3 of this continuing unit, that is unit 3 of class 11. अगर आप लोग मेरे पिछले लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो, पुरानी वीडियोस को. So today the chapter which I am going to take here, that is cell cycle and cell division. So here see, actually in our very first chapter I have explained to you about structure of cell. Okay, what are the types of cell? We have prokaryotic cell, eukaryotic cell, and especially in these eukaryotic cells, what is the actually organized form of cell? Okay, सेल में क्या होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और वो जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स के साथ रहता है. ओके, दैट इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल. नाउ then I already explained to you that cell is a structural and functional unit of the body, right? Cell, and when different cells combine together it forms tissue, and then organs, organ systems, and then finally organism. So that is the actually level of organization. So basic चीज़ क्या है किसी भी body की, वो है cell, right? So now अब सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, तो हाउ दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस? सो द आंसर इज सिंपल, सेल डिवीजन. यस, एक सेल होता है वो डिवाइड करता है दो में. आफ्टर दैट टू सेल्स डिवाइड्स इन फोर सेल्स 8 cells 16, लाइक दैट. ओके, एंड द प्रोसेस गोज ऑन, एंड फाइनली several thousands and millions of cells are being produced. And then the group of cells it makes tissues like that. So वही चीज़ हम अब इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरह से सेल डिवाइड होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है. देखिए, अब जो सेल है वो डिवाइड होता है, देयर इज़ अ प्रोसेस बिहाइंड दिस डिवीजन. ओके, और उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्चुअली सेल साइकिल. अब इस सेल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं. सो वही फेजेस आप इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हो. So we will continue this chapter. So I think this chapter or this lecture is gonna be really interesting one. So please इसको अच्छे से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. So let's get started. So here we go. This is actually the cell cycle. Cell cycle is actually divided into two phases, that is first interphase and second is mitosis. Okay, now we'll first take up mitosis. Actually mitosis is a cell division which is further categorized by two processes. What are those two processes? Karyokinesis and cytokinesis. See, karyo word is related to nucleus. Okay, so karyokinesis means division of nucleus. I will explain it to you later with the picture, so it will be more clear to you. And cytokinesis means division of cytoplasm. First, what happens during the division of the cell? Nucleus divides. Okay, and after nucleus is done, then cytoplasm together divides, and then two cells are being formed. And further, karyokinesis is divided into prophase, metaphase, anaphase, and telophase. So this is actually the mitosis. Now here you can see the karyokinesis, single cell is given there, right? There is having only a one nucleus, but when it divides, the cell divides in two. What happens? Nucleus also divides in two equal nuclei. That is called as nuclear division, which is called karyokinesis. So this is the actually picture showing karyokinesis. Now this is the picture depicting cytokinesis. Here what is happening, you can see here the cell is trying to divide it into two, but nucleus has already divided. Now cytoplasm as a whole, now you know what is cytoplasm, the jelly like material present in the cell, it is now dividing into
dividing, and finally 2 cells will be formed here. So this is called cytokinesis. So here cell cycle, again we are coming here, interphase and mitosis. Mitosis, I have explained you about karyo and cytokinesis. Now let's take up the interphase first. Now what is interphase? Interphase is actually called resting phase. Okay, resting phase. Now in this interphase or phase, what happens actually, cell is preparing for division. Okay, after interphase what happens, cell has to divide, mitosis will start. Okay, so here it rests and starts preparing for further cell division. Here so many things occur step by step, those will be discussed. Okay, now actually what happens in the interphase, that is further divided into 3 further subphases. Okay, interphase में जो कुछ भी होता है वो 3 आगे further subphases में divided है, और वही हम आपके साथ discuss करेंगे. So you can see here the picture is given where interphase is divided into 3 subphases. The first is G1 phase, okay, second is S phase, and the third is G2 phase. Now you have to listen it carefully. What happens in G1 phase? Actually G1 phase is what? Where cell is metabolically active. Okay, cell it is also a kind of interval between mitosis and initiation of the S phase. ये क्या होता है, माइटोसिस और जो आपका एस फेस है उसके बीच का टाइम पीरियड होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, G1 फेस. ओके, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, पहले माइटोसिस है, बाद में एस फेस है, तो ये मिडल ऑफ दिस ये है. नाउ व्हाट हैपन्स एक्चुअली G1 फेस होता क्या है, द ऑर्गेनेलीज, जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो क्या अपने को डुप्लीकेट करना शुरू कर देती हैं. अब आपको पता है ऑर्गेनेलीज हमने सब डिस्कस किया है. वी हैव गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, सो राइबोसोम्स, एवरीथिंग गेट्स डुप्लीकेटेड इन G1 phase. Okay, this is the you can say a process which goes on during this phase. Now the next phase is S phase. This is actually the important phase in interphase because यहाँ पर क्या होता है, जो DNA है ना न्यूक्लियस का, that is replicated. Replicated मतलब duplicate, डबल हो जाता है, उसका अमाउंट डबल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज DNA का अमाउंट है 2, सो वो इंक्रीज होकर डबल हो जाएगा, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 4. ओके, सो इट्स ऑलरेडी गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो, सो यू कैन गो थ्रू दैट content. So simply DNA gets replicated. Okay, and when it replicates होता क्या है, अब आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, जब वो रेप्लिकेट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में चेंज हो जाते हैं, जिस तरह से, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं. दिस एस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फेस. दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग है. नाउ the second phase here, or sorry, the third phase is G2 phase. In G2 phase what happens actually, enzymes and some other protein synthesis occurs. Okay, proteins बनना शुरू हो जाते हैं, enzymes बनना शुरू हो जाते हैं, ATP produced in large amount. ATP आपको पता है energy boosters जिनको बोलते हैं हम, adenosine triphosphate, if you remember we have studied in second chapter. Okay, वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं. और G2 फेस में एक बात याद रखनी है आपने, सेंट्रियोल रेप्लिकेट होता है. अगर आप सेल को ढंग से पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था उसमें सेंट्रियोल्स बताया गया था. सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर होता है सेल में, ठीक है, वो रेप्लिकेट होता है, और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ सेल डिविजन. ओके, सो दैट इज द एक्चुअली इंटरफेस कैरिंग 3 सब फेसेस, G1 phase, S phase and G2 phase. So children, I want to tell you here about the chromosome. मैंने आपको बताया क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्रोमैटिड्स जो होते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं. यू कैन सी हेयर. ओके, दिस इज़ द एक्चुअली स्ट्रक्चर. दिस इज़ 1 and this is 2. ओके, वी कॉल देम सिस्टर क्रोमैटिड्स. यू कैन सी हेयर, and these 2 chromatids are actually joined through a single point from where
they are joined, that point is called as kinetochore. Okay, so this is the chromosome with kinetochore. This is the structure of the chromosome. और वही आप करोगे सेल डिवीजन में. एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ. आई टोल्ड यू दैट सेंट्रियोल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ओके, सो centrioles, actually the structure of the centriole, you can see here, it's an organelle, okay, containing two cylindrical structures called centrioles. They are surrounded by pericentriolar material. If we look into the diagram of the centriole, here is the diagram of this plant and animal cell. Okay, so see, this is actually the centriole. Okay, so this structure, this organelle centriole, plays a very important role where in सेल डिवीजन. ओके, और वो आपको पता चलेगा जब आप माइटोसिस पढ़ोगे कि किस तरह से सेंट्रियोल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सो दैट इज़ अबाउट द थिंग. नाउ द actually after this, which is called G2 phase, see, you can see here, I'm just now making you to study through this book itself, your book itself. Okay, so here you can see that cycle which I have already explained you: G1 phase, S phase, G2 phase. Okay, and this is M phase. What is M phase? Actually mitosis. Okay, mitosis phase. Basically cell cycle, two types. Okay, everything we have discussed here. So now one more important point you should note, that what happens, see, it's not like every cell in human body always divides and divides. कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम तक डिवाइड करते हैं, उसके बाद वो मच्योर होकर डिवाइड करना छोड़ देते हैं. ओके, सपोज इन अडल्ट एनिमल्स, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ हार्ट. ओके, हार्ट इज हैविंग cells which are called heart cells. So heart cells actually they divide only occasionally as needed to replace cells. अगर suppose आपके heart cells damage हो जाते हैं due to injury, accident और cell death हो जाता है, उस वक्त replace करने के लिए उन dead cells को cell divide करता है. Otherwise heart cells after gaining certain maturity they stops the power of division. Okay, so these cells that do not divide further, they exit G1 phase. वो G1 phase छोड़ देते हैं and they enter into an inactive stage called quiescent stage. वो एक inactive stage में चले जाते हैं जिसको हम quiescent stage बोलते हैं, that is G0. Okay, so they act as a inactive सेल डिवीजन. वो आगे फर्दर कोई सेल डिवीजन नहीं करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई फंक्शन नहीं हो रहा है. ऑब्वियसली यू नो हार्ट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी, सो फंक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, बट दे डू नॉट डिवाइड. सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव. ओके, दे रिमेन्स एक्टिव, but they no longer proliferate. Proliferate means divide. They no longer divide. Only upon the condition when it is critical. कोई accident हो जाए, कुछ हो जाए, when we have replacements, only then they divides. Then one more thing I want to tell you here. See, अगर हम human cell लेते हैं, human cells, these cells divide once, एक बार within 24 hours. Okay, they divide once in approximately every 24 hours. But there is exception, that is yeast. It's not human cell obviously. जो yeast होता है, it can progress through the cell cycle in only about 90 minutes. So you can see the difference, okay, between different organisms. It depends. So there is one more thing important here. I have already underlined. Cell division proper lasts for only about an hour. जो cell division है, that occurs only for 1 hour. That means suppose 24 hours is the time, so only it lasts for 1 hour. The remaining time, the 95% time, means that belongs to interphase. वो 95% जो सेल है वो आपका रेस्टिंग फेज पे होता है. ये अपने प्रिपरेशन कर रहा होता है फॉर द नेक्स्ट फर्दर एम फेज. ओके, सो दिस इज अबाउट सेल डिविजन एंड इट्स फेजेस. नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइटोसिस इन डिटेल. आपको मैंने बताया माइटोसिस में डिफरेंट फेजेस होते हैं. इट्स गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो.
प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, क्या क्या करता है सेल। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स किस तरह से लाई करते हैं, क्या होता है प्रोफेस में, फिर मेटाफेस, टेलोफेस सभी में, और फिर किस तरह से वो एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड करता है। वी ऑल गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, सो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।